Hello friends, welcome to UPSC Akada. I am Manish Shokeen from the Circle of Psychology Telegram channel. Today we will discuss why to memorize syllabus. हर बार हर टॉपर बार बार यही बात कहता है whether it's psychology optional or GS. Memorizing syllabus of mains is the first step for mains preparation. Yet we discount it, and at the end of the day we have to pay the price for it. The first question is why? Why to memorize? As per my experience, it will give you plus half or even plus 1 marks per question. If you memorize the syllabus at the subtopic level, we will come to the subtopic aspect later. Just to prove my point that it will help you gain half marks or 1 marks in question, let's consider a PYQ. So this is the 2018 question from memory chapter. Human memory is not like information stored in tape recorder or compact disc. Critically evaluate the statement. So, starting with the introduction. इन क्वेश्चंस में बेसिकली हमें इस बात का ध्यान रखना है कि there is a kind of comparison between human memory and other memory storing devices. Memory, for example, CD, tape recorder, pen drive, whatever as per the technological evolution. So, in introduction, I just simply explained these technical devices, how they store memory. That's all. Now coming to the moot point that where this syllabus is required. So before moving to next slide, let's see the syllabus of memory chapter. First aspect is encoding and remembering, like ways or mechanism of memory processing. The next is types. And then multi-store model levels of processing. These are this is the modeling, or this is the, you can say, this is the levels of processing. Organization, mnemonic and technique to improve. This is memory enhancement. These talk about the models, or you can say organization or structure of memory. This is the functionalities. Now coming to theories of forgetting, simple forgetting, and now disorders. See, here I just explained the syllabus in my own terms when we are going to memorize syllabus in this way. Okay, सबसे पहले ways थे, उसके दो aspects थे, encoding, remembering, then types थी, STM, LTM, echoic, then the structure की बात हो रही थी जिसमें मल्टी स्टोर मॉडल की बात हुई, फंक्शनैलिटी की बात हुई, उसमें we talked about the processing levels, then memory enhancement की बात हुई, उसमें हमने mnemonics की बात की, organization की बात की, then we forget things, इसमें हमने theories की बात की, फिर disorders की बात की, amnesia और एक miscellaneous सा concept है, M for miscellaneous, M for meta memory. So this way we memorize syllabus. This is my approach, and it can also further be improved, but you can also devise your own way to memorize it. So please devise a approach.
Now going to the body part where we are going to utilize the syllabus. So coming to the main part, syllabus topics करेंगे क्या, ये सब topics करेंगे क्या? They will provide you the structure to your answers. They will provide you the subheadings, and then they will give you your answer in a more structured manner. They give shape to your content. Because अब मेंस आंसर राइटिंग इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है कि हमें हर एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा, एंड स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ मेंस आंसर राइटिंग. नाउ सी, पहला एस्पेक्ट एनकोडिंग, जो वेज थे उसमें हमने एनकोडिंग को देखा कि ह्यूमन मेमोरी कैसे एनकोड करती है. मल्टीपल रिवीजन से भी एनकोडिंग होती है, फ्लैश पेल मेमोरीज भी होती है जो सिंगल इंसिडेंट्स में ही प्रॉपर एनकोडिंग हो जाती है. टेप रिकॉर्डर सीडी, these physical devices is kind of algorithm जिसमें sequential storage or any kind of language, computer language in which they are programmed to store the memory. Now second aspect पे आएंगे हम, race हो गया, type पे आ जाते हैं. STM, LTM, sensory based, depends on the nature and duration of information कि कौन सी किस तरीके की इंफॉर्मेशन कब तक स्टोर करनी है, उस हिसाब से ह्यूमन मेमोरी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमने बांटे हुए हैं. शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सेंसरी, आइकॉनिक, इकोइक, एक्सेट्रा. इसका टाइप है सिंपल फिजिकल स्टोरेज डिवाइस है, और इट कैन बी डिवाइडेड अपॉन द बेस्ड अपॉन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वन इज टेप रिकॉर्डर, वन इज पेन ड्राइव, वन इज सीडी, एक्सेट्रा. नाउ फंक्शनैलिटीज पे आगे, स्ट्रक्चर हो गया, प्रोसेसिंग कैसे होती है, यहाँ एलेबोरेटिव होती है, मेंटेनेंस रिहर्सल्स होती हैं जो रिहर्सल्स की बात करते हैं. और यहाँ पर again depends upon the device, depends upon the computer language. Then the capacity of memory. Capacity, it depends upon the type of memory. Chunking 7 plus minus 2 of STM to infinite of LTM. Here it is fixed by the manufacturer की 5 GB की है, 10 GB है, etc. 10 गाने स्टोर होंगे, 20 गाने स्टोर होंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट द MP3 era of CDs. नाउ स्पैन ऑफ मेमोरी, कितने टाइम तक हम वो मेमोरी स्टोर कर सकते हैं. फ्यू सेकंड्स ऑफ द सेंसरी मेमोरी टू 4 आवर स्टोरेज ऑफ LTM. इसमें तो जो स्टोर हुआ तब तक चलेगा जब तक मेमोरी डिवाइस प्रॉपरली काम कर रहा है. सी, दीज आर द नेचर ऑफ मेमोरी पे आ जाता है. इसमें क्या क्या एस्पेक्ट है, दिस इज द सब टॉपिक यू कैन सी. आई एम टॉकिंग अबाउट की सब टॉपिक ऑफ मेमोरी की बात हो रही थी. नाउ इश्यूज, जो लास्ट था डिसऑर्डर्स, amnesia एंड अदर डिसऑर्डर्स, इसमें फिजिकल डैमेज और सॉफ्टवेयर एरर. देन द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर, कंस्ट्रक्टिव नेचर. फ्लैश पल मेमोरीज की बात कर लें जो एकदम से स्टोर हो जाती हैं, या मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट, या सजेस्टेबिलिटी, etc. etc. These are the various aspects which says that our schemas where information gets stored keeps on updating, changing, means it is of constructive nature. यहाँ पर जो एक बार स्टोर हुआ वो ऐसा ही सिमिलर एग्जैक्ट कॉपी वापस रिप्रोड्यूस होगा. सो द मेन पॉइंट हेयर इज, सी, हमें सिलेबस याद था. एक 10 मार्कर में हमने 7 डिफरेंट डायमेंशंस दी just because of syllabus. So that's the way it helps you to gain +1. 7 से 8 डायमेंशन अगर आप लिख पा रहे हो 10 मार्कर्स में, you will get maximum mark. And while concluding, I just said what I wrote. One of the points in summary, it's the constructive nature of memory. Like I rephrased in better looking words,
Memory is less like a recording of actual events, but rather a story that is edited each time we tell it. So, in more catchy words, I ended this answer. One value addition, you can say there are a number of empirical evidences to support your content, whatever you say. For example, Bartlett's research that when he told the story of War of Course to the subjects, everybody presented their story uh, instead of using the exact words. They use the words from their own culture. For example, instead of canoe, they use the word boats because they are not familiar with this kind of boat. So you can say that in the constructive nature or in the nature of information, you can use this empirical evidence. There are a number of I use ones, you can use many. So summarizing, why to memorize syllabus? Just to diversify, organize your content and overall answer. Second aspect, how to do that? Just put your me factor in the syllabus. Like I read it and I give my own headings to the subtopics of the memory chapter syllabus so that at the end I have this code and it gave me a fair idea of the syllabus of this chapter. Hope you like the video and stay in touch and keep writing the PYQ Parishram program of UPSC HCS and the Circle of Psychology to gain maximum marks. Thank you.